Good morning and assalamu alaikum. I hope you all are fine. Okay, so students, in previous class we discussed about caring for safety, that how we can keep ourselves safe from any danger. So let's continue this topic. So take out your SST book. In previous class, students, we discussed about safety at home, preventing fire, safety on the road. Now, to open page number 22, and today we are going to discuss safe bicycling. Okay, let's start reading. Take out your bicycle only under adult supervision. Your dad, mom, or an adult sibling may be the best supervisors under you learn to ride safely. A bicycle must have proper brakes. Riding in the daylight and in safe places like parks and grounds protect you from crashes. Stranger and street safety. Streets and neighborhood are places where we will need to take even more safety cautions. Probably even more you take at home. You might come across people you have never seen or met before. These strangers can be very harmful. Always maintain distance from such people. Streets are also not meant to be used as playgrounds. Play in your neighborhood grounds or place near. You will not need to worry about high tension electricity poles and car accidents. Now, next safety measure is calling for help. Safety experts help us in times of trouble. In case of emergency, you can call an ambulance and the police for your help. A list of emergency phone numbers is usually kept in a first aid box. The box contains items that help relieve pain and prevent infections. A first aid box must have bandages, sterilized goose pads, tape, flashlight, torch, antiseptic solution, antiseptic wipes, antibiotic cream, thermometer, scissors, and safety pins. A first aid box should be easily available in emergencies like burns. Okay, student, now tell me that how you can keep yourself safe from any accident whenever you ride a cycle. Yes, you should take out your bicycle only under adult supervision. किसी भी बड़े की मौजूदगी में आपको अपनी साइकिल को चलाना चाहिए. Just like your dad, your mom or any adult sibling, कोई भी बहन भाई हो, कोई भी बड़ा हो, उनकी प्रेजेंस में आपको साइकिल को चलाना चाहिए until and unless you learn to ride safely. जब तक आप बिल्कुल सही से साइकिल नहीं चलाते. And a bicycle must have proper brakes. हमेशा याद रखें बाईसाइकिल के भी आपके प्रॉपर ब्रेक्स ज़रूर होने चाहिए बिकॉज इट कीप्स यू सेफ फ्रॉम एनी एक्सीडेंट. ओके, नाउ द अनदर सब टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज stranger and street safety.
Now how you can keep yourself safe from strangers? Unknown person, आप अपने आप को strange लोगों से, unknown person से कैसे safe रख सकते हैं? You might come across people you have never seen or meet before. आप अपने एरिया में ही, अपनी गली में ही, अपनी स्ट्रीट में आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनको आप नहीं जानते हैं. सो यू मस्ट मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम सच पीपल बिकॉज दीज स्ट्रेंजर्स कैन बी वेरी हार्मफुल. वो स्ट्रेंजर भी आप लोगों के लिए बहुत नुकसानदेह हैं. उनसे आपको हमेशा डिस्टेंस रखना चाहिए. कोई चीज़ उनसे आपको नहीं लेनी चाहिए. ओके नाउ, सो ऑलवेज stay away from strangers. Okay, now another subtopic we are going to discuss is calling for help. Whenever you are in any trouble, what you can do? You can call your father, you can call your mother. Same as safety experts help us in times of trouble. In any case of emergency, you can call an ambulance and the police for your help. And you must remember the number of helpline number of ambulance and police. Students, you must have emergency phone numbers in your first aid box. आप अपनी मामा से कहें कि फर्स्ट एड बॉक्स में जो भी emergency phone numbers हैं कि in case of any emergency, आप किसी भी प्रॉब्लम में आप फ़ौरन किसी को कॉल करें तो आप किस तरह करें, तो वो आपके पास नंबर आपकी डायरी में या फर्स्ट एड बॉक्स में ज़रूर होना चाहिए. Okay, now students, do you know what is first aid box? Yes, this is a box which contains items that help in relief pain. For example, आपकी फिंगर में कट लग गया और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है. सो व्हाट यू कैन डू, आप अपना फर्स्ट एड बॉक्स लेके आएंगे जिसमें बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं लाइक कॉटन, बैंडेज, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, सीजर, थर्मामीटर. तो आपने क्या किया, आपने कॉटन ली, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लगाया उस पर और अपनी फिंगर पे जो ब्लीड हो रहा था उसको आपने रिमूव किया. देन यू हैव टू टेक सनीप्लास्ट फ्रॉम योर फर्स्ट एड बॉक्स और फिर आपने उसको अपनी फिंगर को सनीप्लास्ट से कवर कर दिया. This is your first aid. And students must be a first aid box in your home and car as well. In case of any emergency, आप क्या करेंगे, फ़ौरन फर्स्ट एड बॉक्स आपने निकाला और आपने अपने आप को फर्स्ट एड दे दिया. Is it clear? Okay, so students, I hope you understand that how you can keep yourself safe from any danger or any trouble situation. So be careful while handling machines, keep away from fire and never play with matchsticks. Always cross road very carefully and always stay away from strangers and call safety experts in case of emergency. Okay, now take care of yourself. Inshallah we will meet in next class. Allah Hafiz.